From Namche, we are leaving for Tengboche today. और टाइम दिया गया था 7:50 सबको. मनीष 6 minutes लेट है और मनीष की पेनल्टी है. Manish has to do 6 push-ups wearing that bag. Come on, Manish. Hurry up. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, one single person do it. All right, that's it. That's it. ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है अभी. It's 8 o'clock और हम लोग टिंगबोचे के लिए निकल चुके हैं. Let's see how long it takes. The journey is around 6 hours and with lunch it might be an hour extra. That's Hillary Bridge. You can see how far it is. That's where we came from. Today we are on our way to Tengboche with an altitude of 3,860 meters. Tengboche has some amazing monasteries. So once we reach there, we'll try and cover as much possible to show you guys. और ये आ रहे हैं सुधीर. Hi, this is Sudhir from Hyderabad, India, and just I did my Everest Base Camp trek, and it is a great opportunity I feel, and I successfully completed it. And previously, before this trek, I had lot of I was gone through so many doubts, confusion as whether I can do it or not, what are the challenges, etc., etc. But finally I did it, and the force which drove me all the way to EBC is my desire and my mindset. And this is the greatest opportunity and once in a lifetime opportunity, I can say, and everybody should try it. Thank you. ये आ रहे हैं मनीष. मनीष बहुत ही महान है. मनीष ने अपना 16 किलो का शायद बैग खुद ही उठा रखा है. और ये है हमारे KP, अंकित एंड रॉब, all rocking towards Tengboche. हम लोग को वॉक करते हुए 1 घंटा हो गया है. टिंगबोचे का रास्ता शुरू में थोड़ा फ्लैट है जो कि हम एंजॉय कर रहे हैं अभी, बट आफ्टर लंच ऑब्वियसली इट्स गोना गेट हार्ड. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे है क्योंकि आप देख सकते हो बैकड्रॉप में अमा दाबलम और लोटसे. एवरेस्ट इज स्टिल behind the clouds, but you have this full view when you are walking towards Tengboche. Unfortunately, Niloy had to turn back. उसके पैर में थोड़ी इंजरी थी and काफ़ी लिम्प करके चल रहा था, so there was no way he could have continued. So it's me and Ashish completing the journey for him. Yeah, it's really sad that he had to go back. He will be evacuated back to Kathmandu today, and we will still be continuing our journey. आज हम लोगों ने अपनी जर्नी थोड़ा अर्ली स्टार्ट की क्योंकि हम रात को नहीं पहुंचना चाहते थे. We started at around 8 o'clock, and it's what time is it? It's about 9:45. 9:45, so almost 2 hours of walking. Again, I think this is a viewpoint. You guys can see the mountains in the backdrop. So this is Ama Dablam, that's Lotse, and not sure about this one. And this is like for good luck. यहाँ पे रास्ते में एक बेकरी आई है, हाई माउंटेन बेकरी एंड कैफ़े. इस रास्ते में बहुत ज़्यादा बेकरीज और कैफ़ेज़ नहीं हैं, सो दैट दिस माइट बी प्रोबेबली द लास्ट स्टॉप.
और हम लोग ने लिया है अपना लंच ब्रेक. आई डोंट नो द नेम ऑफ द प्लेस. इट सेज हॉर्स ऑन हेयर. आई डोंट नो इफ दैट्स अ प्लेस, बट दिस इज़ वेयर वी आर लंचिंग. एंड देन आफ्टर दिस हम लोग वो ब्रिज क्रॉस करते हुए 2.5 घंटे का रास्ता और बचा है. एंड इट्स ऑल अपहिल फ्रॉम हेयर. और साथ में बह रही है दूध कोशी. आप देख सकते हैं कि कितना ही. It's lunchtime here in Nepal. The trekkers have had a fantastic morning, a little bit of a climb out of Namche. Beautiful sceneries up to Ama Dablam and Lhotse. And there's the really good-looking guy of the party. He's known to all the girls as KP. There's Mani. There's Manish. Manish is doing well to be still awake. Sudhir, Raju, Andrew, Ash, Ankit, and we've lost Mangal and Chewang. Greetings to you all. We're signing off from the middle of Nepal. हम लोग लंच कर चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं टेंगबोचे के लिए. यहाँ से जर्नी है अभी 3 hours and it's all uphill 3 hours from now. And we are going to cross that beautiful suspension bridge. And we are back on the suspension bridge. Oh my god, it's really wobbly. सस्पेंशन ब्रिज इस ट्रिप का काफ़ी बड़ा हाईलाइट है, बिकॉज आपको बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिजेस क्रॉस करने पड़ते हैं. और नीचे आप देख सकते हो कि दूधकोशी रिवर इज़ अमेजिंग. बहुत ही स्टनिंग व्यूज़ हैं. हमको चलते हुए 1.5 घंटा हो गया है लंच से. हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है. दिस इज़ लाइक अ ब्रेक पॉइंट. एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ रेस्टिंग, स्पेशली पोर्टर्स. अब यहाँ से प्रीटी मच 1 घंटा और है अभी. और हम लोग पहुंच चुके हैं टेंगबोचे. We took around 7 hours to complete the journey. और टेंगबोचे बहुत ही ब्यूटीफुल है. देखिए, लंच के बाद तो लिटरली 2 घंटे इट वॉज पूरा अपहिल, पर इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट. और ये है हमारी टीम, धाराशाही हो चुकी है. देखिए, ये हमारे बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन मनीष. आप सोच नहीं सकते, ये EBC पे भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं और मंगल भैया को कह रहे हैं कि भैया लास्ट बॉल है, 1 ओवर और देख लेने दीजिए. तो ये तो हाल है हमारे इंडिया के क्रिकेट टीम का और क्रिकेट फैंस का बेसिकली. और ये आई एम प्रीटी श्योर इज़ मोनेस्ट्री. हम आपको आगे से दिखाते हैं. करने दीजिए. ये देखिए अंकित जी काफ़ी जवान हैं लेकिन बूढ़ी हड्डियाँ हो गई हैं इनकी.
ओल्ड सोल है ये बहुत। इनका जो लाल चमकता हुआ टी शर्ट है वो आंखें चुंधिया देने वाला था। देखिए अब ये खोल के दिखाएंगे अपना बटन। हम लोग खाना नहीं खा पाए, हमको रिफ्लेक्टर्स पहनने पड़े अंकित के टी शर्ट के चक्कर में। हम खाना नहीं खा पाए क्योंकि रोशनी इतनी ज़्यादा थी। सबकी फोटोग्राफी चालू है क्लिफ पे। टेम्परेचर है यहाँ पर -1 और आप देख सकते हैं पूरे क्लाउड्स, कुछ दिख ही नहीं रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी लो है। और हम पहुँच चुके हैं टेंगबोचे। और दूर हमारा टेंगबोचे गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम 1 नाइट स्टे करेंगे। टेंगबोचे की मोनेस्ट्री, जो कि शायद हम अभी थोड़ी देर में बैग्स रख के फ्रेश होके आते हैं। और हम पहुंच चुके हैं टेंगबोचे गेस्ट हाउस और मंगल जी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और हम आज रात यहीं रुकने वाले हैं। हम आपको टी हाउस दिखाते हैं और लेट्स गो इनसाइड। ये है हमारा गेस्ट हाउस और ये है हमारा टी रूम और ये है हमारी टीम। I think we should name it. Rob has just given this team a new name. Rob, would you like to take the credit and tell us what's the team's name? The team today are being christened the Namche Nomads. Namche Nomads. So Namche Nomads is in Tengboche without any issues. All spirits are high. और अब हमको चाय चाहिए अदरक वाली। ट्रिप पे अकेले लड़की होने का भी फायदा है। टेंगबोचे में मुझे मिला है लग्जरी रूम। यू कैन सी इट्स अ डबल बेड। सो आज एकदम खुले में फैल के सोएंगे हम। अब हम आ गए हैं Tengboche Monastery. This is the highest monastery in the world. तो इस monastery को visit करने के लिए you have to buy a ticket. There's an entry fee of NPR 300 for any. I mean they don't differentiate कि अगर आप किसी भी different country से हो, different passport है, it's 300 NPR for everyone. क्या है नहीं इनसाइड? सो ऑलराइट गाइस, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और टेंगबोचे में बहुत सारे इंडियन फैंस हैं। यू कैन सी सम विद सो no matter what altitude we are on, it's India versus Pakistan, so we had to watch it.